Assalamu alaikum students, I am Rabia Manzoor and we are talking about normal distribution chapter number 10 of FSC part 2 book statistics. I hope all of you are fine. We were discussing about the second exercise of chapter number 10 which is 10.2. We already have discussed so many questions. Today we are going to discuss question number 8. It has two parts A and B. So I'll start with question number 8, part A. If x approaches to a normal distribution with mean 70 and variance 25, find the value of A such that probability that mod of x minus 70 is less than A is 80% or 0.80. Next मैं बाद में पढ़ती हूँ, but at first we will solve this part. We need to find a value of A. Now what is A? We have an extra information or probability which is given, in which we have the value of area or the probability. Now what is missing, which is A? A is the value of random variable x, which is normal random variable. So in this part we want to find the value of random variable while a probability is given. So the mean is represented by mu, which is 70, and I didn't write variance, which is 25. I just write standard deviation, which is represented by sigma. The value of standard deviation is 5. This is the square root of variance. And this is the information which is given, that probability mod of x minus 70 is less than A is 0.80. So we want to find the value of A. Alright? So we want to find the value of A. And as you know, we have already discussed how to solve this modulus by using theorem. That is theorem number 10.4. In the initial pages of this chapter, this theorem says that probability of mod of z is less than A is equals to 2 phi of A minus 1. So we will apply the same theorem on this in this probability. So first of all, we will shift this 70 to the right side of inequality, which is less than. So जब हमने 70 को हम 70 को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके गए तो यहाँ पे ये माइनस में था और यहाँ पे जाके ये प्लस हो जाएगा. सो दिस इज a प्लस 70 एंड यहाँ पे बच गया x, दैट इज मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 0.80. नाउ आई एम अप्लाइंग थ्योरम नंबर 10.4 एट दिस स्टेज. सो दिस इज 2, ये जो राइट साइड पे वैल्यू होती है यहाँ पे आती है, ठीक है. 2a प्लस 70 माइनस 1, ये देखें z की वैल्यू थी यहाँ पे a, तो ये आ गया 2 phi ऑफ a माइनस 1. सो सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू है a प्लस 70. सो मैंने लिखा 2 phi ऑफ a प्लस 70 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.80. अब यहाँ से मैं phi की वैल्यू को सेपरेट कर लूँगी. phi ऑफ a प्लस 70 इज इक्वल टू इक्वालिटी के इस साइड पे लेके जाऊँगी तो ये प्लस 1 हो जाएगा, 0.80 प्लस 1, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और टू राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. तो अगर आप इसको पूरे सॉल्व करें तो यू विल गेट 0.90. सो वी हैव phi ऑफ a प्लस 70 इज इक्वल टू 0.90. नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. So again we use this formula, z is equals to x minus mu or sigma. We have the value of mu, which is 70. We have the value of x, which is a plus 70. This is the value of x, a plus 70. So we just substitute this value and sigma is 5. We don't have z. So हम लोग z कैलकुलेट करेंगे इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हुए, यहाँ phi की वैल्यू को देखते हुए. तो जब ये मैंने 0.90 को टेबल नंबर 10a में देखा, आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z एंड आई हैव प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज अवेलेबल एंड आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z, which is a random variable.
So for in this case, we use table number 10A. I'm sure it is clear now that if you have a value of z and you want to find the value of probability or p, you use table number 9. While if you have probability and you want to find the value of random variable z, then you use table number 10a. The same is the case. We checked 0.90 in 0 and we found the value of z, which is 1.2816. We have all the other values and we just simplified it and found the value of a, which is 6.408. So this is the answer. We found the value of a. Now, further in this question, the author said we want to find the limits within which the central 80% of the distribution lies. Now in this part, we want to find limits. Limits means x की values, यानी कि यहाँ पे x की values थी, जो information given थी ना आपके पास, this one. हमें ये limits find out करनी है, x की values, जिसके दरमियान 80% area exist कर रहा था. So we want to find these values. Now, we want to find limits. We already have calculated the value of a. For limits, just simply substitute the value of a. Before substituting the value of a, I cleared it. We have modulus, right? In previous part, when we were finding the value of a, we used a theorem to remove this modulus. But in actual, जब modulus remove किया जाता है, I write it as, जो modulus होता है वो basically जब modulus remove किया जाता है तो आपके पास आता है दोनों साइंस प्लस एंड माइनस का. मैथमेटिक्स में जब हम लोग मॉडुलस को रिमूव करते हैं तो मॉडुलस जब खत्म होता है तो आपके पास प्लस और माइनस का साइन आता है. यही काम हमने यहाँ किया. जब हमने सिर्फ मॉडुलस रिमूव किया तो ये एक दफ़ा इसकी वैल्यू के साथ माइनस आ गया और एक दफ़ा इसकी वैल्यू के साथ प्लस आ गया और ये बिटवीन का साइन बन गया. सो यहाँ पे अब 70 भी क्योंकि है, हमें सिर्फ x चाहिए होता है तो हम 70 को दोनों साइड्स पे मतलब मूव करेंगे इक्वालिटी के, इनइक्वालिटी के. तो जब ये इधर जाएगा तो प्लस 70 हो जाएगा और ये जब इधर जाएगा तब भी प्लस 70 हो जाएगा. यानी कि हमें दोनों साइड्स को कंसिडर करना पड़ता है. ऐसा नहीं होता कि हम लोग इनइक्वालिटी में एक साइड पे ऐड करें और दूसरी साइड पे ना करें. सो हम दोनों साइड्स पे ऐड करते हैं. तो जब हम दोनों साइड्स पे ऐड किया इसको तो अंदर सिर्फ x रह गया जो कि रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे इसकी दो वैल्यूज बन गई. ये देखिए यहाँ पे मैंने a की वैल्यू भी पुट की है और साथ प्लस 70 भी किया है. तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये जो ग्रीन येलो हाईलाइटेड एरिया है ये दो आपके पास लिमिट्स आ गई है a की. So this is all what we have in part 1, part A. I'm sure it is clear to all of you. Now we are moving to part B. So what we have in part B, bags of flour by a particular machine have masses which are normally distributed with mean 500 grams and standard deviation that is 20 grams. 2% of the bags are rejected for being underweight and 1% of the bags are rejected for being overweight. So there in this part we have condition. If you remember, we have already talked about the question that have some conditions. 2% bags are rejected because they were underweight. And 1% of bags were rejected due to overweight.
So this is the condition. जब मैं इस कंडीशन को ग्राफिकल फॉर्म में लेके आऊंगी, जब मैंने इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट किया, तो दिस इज द सेंट्रल पॉइंट, यानी कि ऑन एवरेज उसके अंदर 500 ग्राम्स वेट होना चाहिए। अंडर वेट का मतलब है 500 से लेस होगा, तो 2% कहीं इसके लेफ्ट कॉर्नर में होगा एरिया। सो ये वो एरिया है जो जिसमें बैग्स अंडर वेट हैं, दैट इज 2%। और ऑब्वियसली ओवर वेट तब होगा जब 500 ग्राम से ज़्यादा वेट होगा, तो 500 से ज़्यादा 500 से ज़्यादा अगर वेट होता है तो वो ओवर वेट होंगे, तो सिर्फ 1% है जो ओवर वेट होने की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। सो ये उसकी राइट टेल पे होगा, ओवर वेट 1% है, तो दैट विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द टेल, ऑन द राइट टेल। सो ये दरमियान में वो एरिया है जो एक्सेप्टेंस रीजन है, यानी कि ये वो बैग्स हैं जो एक्सेप्ट हो रहे हैं, जितना जो अंडर वेट भी नहीं है और जो ओवर वेट भी नहीं है। सो वो अगर 2% अंडर वेट होने की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं और 1% ओवर वेट होने की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये 2 एंड +1 तकरीबन 3% जो बैग्स हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं, तो 97% बैग जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहे हैं। सो 97% एरिया जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन है, यानी कि अगर इसके अंदर वेट एग्जिस्ट करता है तो बैग्स जो है वो एक्सेप्ट हो रहे हैं, उनकी मतलब रिजेक्शन रीजन में नहीं आ रहे। सो हमने फाइंड क्या करना है, बिटवीन व्हाट रेंज ऑफ वैल्यूज शुड द मास ऑफ द बैग ऑफ द फ्लोर लाइज टू बी एक्सेप्टेड। सो वो कह रहे हैं आपने वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जिसके दरमियान में आपके पास जो बैग्स हैं वो एक्सेप्ट हो जाएं। ठीक है, एक्सेप्टेंस रीजन फाइंड आउट करना है आपने। सो आपने प्रोबेबिलिटी आपके पास, आपने 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, ए एंड बी, वो पॉइंट्स जिनके दरमियान में आपके पास बैग्स जो हैं वो एक्सेप्ट हो रहे हैं, उनका दैट इज 0.97, और उनके दरमियान जो प्रोबेबिलिटी है वो 97% है। ये मुझे कैसे पता चला कि इनके दरमियान 97% प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 2% अंडर वेट है जो कि लेफ्ट टेल पे एग्जिस्ट करते हैं और 1% ओवर वेट है जो कि राइट साइड पे एग्जिस्ट करते हैं। और अगर ये 3% निकाल दूँ तो बाकी के 97% एक्सेप्ट हो रहे हैं बैग, सो वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहे हैं। तो दिस इज द एरिया जो कि ए और बी के दरमियान में आ रहा है। सो मैंने ये 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, ए एंड बी, एंड वी हैव ऑलरेडी solved such kind of questions earlier, so I'm sure this is not that difficult for you guys. I'm simply solving it. Phi of b minus phi of a, that is 0.97. I am taking it as equation number 1. Now we have phi and we have phi of a and phi of b. We want to find a and b, where if I ask from you, then how much area exists less than phi of a, यानी कि phi of a से पहले कितना एरिया एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज ए पॉइंट ए, इससे पहले 2% एरिया एग्जिस्ट करता है, यानी कि इससे पहले जो प्रोबेबिलिटी है या एरिया है दैट इज 0.02। 2% परसेंटेज का साइन खत्म होगा तो डिवाइड कर देंगे 100 पे, दैट इज 2% मीन 0.02। इस पॉइंट ए से पहले कितना एरिया है, दैट इज 0.02 और 2%। सो phi of a is equals to 2%, 0.02, and we want to find a. Now I am using table number, table 10a. Why I am using table 10a? Again, I have probability and I want to find a, yeah, value of a random variable. So I am going to check. Right. This is table number 9.
Now we have table number 10A. So in table number 10A, 0.0 I need to check 0.02 को मैं 0 में देखूंगी. 0.02 को जब मैंने 0 में देखा तो मेरे पास आ गया -2.0537. -2.0537. So this is the point A, and now I am going to consider equation number A now using equation 1. Phi of A is equals to 0.02, यानी कि phi of A से पहले 2% एरिया है, तो that is 0.02. यहाँ से आप easily phi of B निकाल सकते हैं. Phi of B is 0.97 plus 0.02. That is equals to 0.99. Now again, I am using table A. So 0.99 को 0 में देखेंगे. .3263. So these are the 2 points A and B. Now this is not the answer. You need to find the value of x. These A and B you calculated were from standard normal. Now you will convert it into normal by using the formula of z. You can say it is z of A and z of B. Now z is equals to x minus mu divided by sigma. So and we have z of A and z of B. Because we are dealing with 2 points, so I am differentiating it just by using number A and B. So z of A मेरे पास है -2.0537. I'm sure it is right. Yes. Mu is 500. X is A. Mu is 500. And sigma is 20. And similarly, for the other point,
is 2.3263. The second value of x is b, which is required 500 divided by 20. Now you will just simply solve it and you will find the value of a from this formula, from this equation, and the value of b from this equation. I hope this question is clear to you. We have used the same terminology for both questions. You can further perform different questions. The further question number 9 and 10, which contains the same question. There will be some kind of conditions, or there will be some kind of percentage or probability, and you just simply need to find the value of x variable, which is normal random variable. So do further questions for your exercise from your exercises for your clarity of your concept. Thank you. Allah Hafiz.